Senior Congress leader Anand Sharma announces he is resigning as chief of the steering committee of the party's Himachal Pradesh unit days after a similar move in Jammu and Kashmir led by veteran Ghulam Nabi Azad. Prime Minister Modi only thinks about launching raids against his political rivals via the CBI and the ED all the time, while Arvind Kejriwal thinks about healthcare, education and employment. Manish Sisodia, facing charges of corruption over Delhi's liquor policy, tells NDTV, asks what the CBI found after raiding his home and his office. The problem has not been resolved. China disregarded our border pact. The Galwan Valley clash cast a shadow on ties, the foreign minister says. Speaking on the border situation, Foreign Minister Jaishankar says that a relationship cannot be a one-way street. The Mizoram Chief Minister issues a public apology after videos go viral of his daughter hitting a doctor, allegedly after she was denied VIP treatment in scheduling an appointment. Hello and welcome. G23 woes are mounting for the Congress. Now yet another senior leader, veteran Anand Sharma, has resigned as chairman of the Himachal Pradesh Congress Steering Committee. This comes just days after Ghulam Nabi Azad quit from a crucial Jammu and Kashmir Congress committee, and at a time when the Grand Old Party is in the process of trying to find its next chief. Both Mr. Azad and Mr. Sharma are prominent leaders of the G23 grouping, which has been critical of the decisions of the party leadership and called for a radical overhaul to revive the party's flagging fortunes. In a letter to Congress President Sonia Gandhi ahead of the assembly elections in Himachal Pradesh, Mr. Sharma said that he felt left out of the party's decisions ahead of the polls and that his self-respect is non-negotiable. He spoke with NDTV on Left, Right and Centre. I'm a member of the Congress Working Committee, Vishnu. Yep. I'm one of the senior most leaders from the state. Yes. And I'm also a member of the Political Affairs Committee of the CWC. Right. I didn't ask that I should be made a chairman of a steering committee, that's the Apex Committee, Yes. in which all the other chairmen are members. Yes. Why I was not involved in all the meetings, I can't answer. Please No, but ask why those have who you could be in the resigned as meetings chairman in of the Delhi and Himachal Simla. Pradesh Congress Steering Committee? Do you believe your self-respect? Well, my position was become untenable. Listen, listen, Vishnu, if you are made a chairman without consultation, and then you are never invited for the key meetings, both in Delhi and there, Yeah. and you send central observers, Yeah. I spoke to everyone. First, the mandate was not made clear. There's multiplicity of committees. Then, after that, no answers came. Yeah. I'm not seeking anything for myself. Is this We a want to prelude fight the to you BJP. resigning from the Congress, sir? There's no question. All And right. those who are saying they are the ones who don't belong to the Congress. You know, senior leaders like you and Ghulam Nabi Azad, that there is this process of sidelining you by some leaders in the party. No, And it's not sidelining. Just We insulting? were targeted and vilified for having written a letter to raise issues in the party for internal reforms and collective decision making and collective leadership. Is it a crime? That has been the tradition and history of the Indian National Congress. We are not rebels. We are reformists. We are not change seekers. We want internal democracy. We want collective leadership, collective decision making. We want restoration of the Congress Parliamentary Board as per the Constitution. That Rahul Gandhi should not, or the Gandhis, Priyanka Gandhi Vadra, should not be Congress president, yes or no? Is the Congress only confined to these two names? Meanwhile, the BJP is gearing up for the Telangana polls. A party leader, the Home Minister Amit Shah, was in Telangana today and he addressed a public rally in Manugode ahead of a by-poll in the constituency, and his target was KCR. मैं आपको कहता हूं, इस विधानसभा में उपचुनाव रेड्डी जी को जिता दो। मैं गारंटी देता हूं
केसीआर की भ्रष्टाचारी सरकार यूं चली जाएगी। मित्रों, ये तेलंगाना सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। अगले चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री आने वाला है और भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद हर सितंबर में यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। And India is going through a difficult phase with China for the second time in a week. The External Affairs Minister Dr. Jaishankar has spoken about the continued friction in Eastern Ladakh, casting its shadow on the overall bilateral relations between India and China. He underlined how China disregarded the agreements between the two countries and amassed troops on the line of actual control, a situation that has yet to be resolved. Dr. Jaishankar was speaking to the Indian community in Brazil. They are our neighbor, and everybody wants to get along with their neighbor. I mean, in personal life and in country-wise as well. But everybody wants to get along with their neighbor on reasonable terms. You know, I mean, I must respect you, you must respect me. So, from our point of view, we've been fairly clear that, you know, if we have to build the relationship, then there has to be mutual respect. We need that mutual respect, we need that mutual sensitivity, we need that mutual interest. And that is the basis for building it. Right now, I think it's no secret, we are going through a very difficult phase, and mainly because we have agreements with China going back to the 1990s. Which prohibits bringing, massing troops in the border areas. They have disregarded that. You know what happened in Galwan 2 years ago. So that problem has not been resolved, and that is clearly casting a shadow. And in Noida, a woman has been arrested and sent to 14 days judicial custody after a video of hers went viral that showed her attacking, shouting expletives, using indecent gestures, threatening and manhandling one of the security guards at her gated colony because he was reportedly slow in opening the colony gates for her car. कल ये हुआ था कि हमारा एक गार्ड अनूप चौधरी जो है वो वहाँ पे गेट पे थे, तो मतलब मैम नीचे से आई गाड़ी निकालने के लिए, तो गेट खोलने में थोड़ी देरी हो गई, तो उसे गाली गलौज से मतलब बदतमीजी से पेश आई उनके सामने और उनसे मतलब झगड़ा करने लगी। एंट्री करने के लिए मतलब गेट खोलने में थोड़ी देरी होगी, बस यही था और कुछ नहीं था। ये मामला जो है ये गाड़ी के एग्जिट को लेकर ये हुआ था और इस संबंध में पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके तहरीर के आधार पे, चूँकि ये जो भी इसने उसमें जो आरोप लगाए हैं उसके संबंध में 153A, 505(2), 323, 504 और 506 में जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जो वाहन महिला के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था उस वाहन को थाने पे ले जाया गया है और महिला को भी जो है अरेस्ट करके थाने पे ले गए हैं और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसमें ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, आपको उसके बारे में डिटेल प्रेस ब्रीफिंग भी दी जाएगी, तो ऑलरेडी जो आप बता रहे हैं उसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। And yet again, a toll booth employee has been attacked, this time in Madhya Pradesh. A man slapped a woman employee of a toll booth after she refused to let him go through without paying the tax. The man, the CCTV footage shows him hitting her. The woman hits him back. Rajkumar Gujjar, whose car was without the FASTag electronic toll payment system, claimed that he was a local and hence should be exempted from paying the toll tax. Of course, he didn't have any documents to prove that.
Now, the police say they've registered a case against him for assaulting a toll plaza employee, but even though it's all on camera, the accused is yet to be arrested. And in Mizoram, the Chief Minister has issued a public apology after a video went viral that shows his daughter attacking a doctor allegedly because she was denied VIP treatment in making her appointment. The Chief Minister's family has come under flack for this issue. This video went viral about a week ago, and it shows the Chief Minister's only daughter hitting this doctor at this clinic. The Mizoram unit of the Indian Medical Association protesters, with doctors wearing black badges to work on Saturday. The Chief Minister finally had to tender a public apology via his official social media handle. And staying with the Northeast border disputes, Assam and Meghalaya have begun phase 2 of their border talks in a move to resolve pending border disputes between the neighboring northeastern states. The second phase of the border talks between Assam and Meghalaya will be beginning with the Guwahati Chief Minister Conrad Sangma visiting Guwahati on Sunday to take part in these discussions with his Assamese counterpart Hemanta Biswa Sarma. That like first phase, second phase will also be smooth. Second phase will see some kind of resolution between the two states, and of course whenever required, whenever necessary, the Chief Minister of both the states will continue to meet, and if some guidance is required to be given to the regional committee, we'll keep on giving. And stakeholders from all areas have already been discussed, details have been discussed with these stakeholders. They've been involved in the discussion. And based on a very, very detailed and very long drawn process, we finally were able to come up with an MOU. And the CBI has issued lookout circulars against 8 people, private individuals named in this alleged corruption scam in the Delhi excise policy, but the Delhi Deputy Chief Minister does not feature on this list. We caught up with the man at the center of this controversy as he takes on these charges being hurled at him by the BJP. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, जिनको सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो एफआईआर की है सीबीआई ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप मंत्री थे और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर आपने कुछ ऐसे फैसले किए, अनुचित लाभ दिया टेंडर होने के बाद में, जिससे कि उनको जो शराब कारोबारी हैं उनको फायदा हुआ। ये सीबीआई की जो एफआईआर है, इसमें आपके ऊपर आरोप लगा है, अनुचित लाभ दिए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी मंजूरी भी आपने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं ली है। देखिए, ये पूरी की पूरी एफआईआर भी मैंने पढ़ ली और मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। जिन लोगों ने सीबीआई से एफआईआर कराई है, जो लोग अब सीबीआई को मेरे घर रेड मारने भेज रहे हैं, जो लोग मुझे अरेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं, इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है। कभी कहते हैं जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी एफआईआर की तो बोले 2 कंपनियों के बीच में 1 करोड़ का लेन देन हुआ, वही घोटाला है। तो मेरा ये कहना है, ये सब इधर उधर की बातें हैं। असली बात ये है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर शराब का घोटाला इनको चिंतित करता तो आज गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल होता है। जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं और वहाँ इन्हीं के लोग पैसा कमा रहे हैं, जहरीली शराब बेच के भी और असली शराब बेच के भी। तो वहाँ कराते, वहाँ सीबीआई के दफ्तर खुलवाते, यहाँ पे रेड करवा रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ जब्त क्या किया है आपके घर से? 14 घंटे रेड चली। मेरे घर पे क्या मिलेगा? मेरी बीवी के, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, उसके अलावा क्या मिलेगा इनको? मेरा पर्सनल कंप्यूटर ले गए, किताबें हैं बहुत सारी, और मेरा मोबाइल ले गए पर्सनल। अच्छा। मेरा नंबर वगैरह भी सब जब्त कर लिया है। अच्छा। और कुछ फाइलें थी सरकार की, उनकी
डॉक्यूमेंट्स थे, बस वो ले गए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में ये जो कथित घोटाला जो कहा गया है या कथित भ्रष्टाचार कहा गया है, इसका जिक्र नहीं है कि ये कितना बड़ा है। केवल एक करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात उन्होंने इसमें की है। लेकिन मैं फिर भी 144 करोड़ वाली बात पे आना चाहूँगा कि 144 करोड़ की फीस, लाइसेंस फीस जो है वेव ऑफ की, ये आरोप लगा। 30 करोड़ रुपए की जो फीस थी एक लाइसेंस धारक की, वो रिफंड की। 50 रुपये पर केस जो है वो आपकी सरकार ने छूट दी। ये सीबीआई की एफआईआर में अभी नहीं लिखा है, हो सकता है आगे हो, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही बीजेपी ने शुरू से आरोप लगाए और सीएस चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में यही आरोप जो हैं शुरू से आधार बनकर, इसी के आधार पर मुझे लगता है एफआईआर हुई होगी। तो इस पर आपका क्या पक्ष है? देखो, आप इनके सारे बयानों को देखो, इसीलिए मैं आपसे बोला, पहले कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 144 करोड़ का हुआ, कोई दूसरा नेता, सबके अलग अलग बयान है। तो इन बयानों से थोड़ी होता है, जब कुछ हुआ ही नहीं है अल्टीमेटली सच सामने आ जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सच ये सामने आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचते रहते हैं सीबीआई किसके घर भेजूं, ईडी किसके घर भेजूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 24 घंटे बैठ के सोचते हैं यार देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, स्कूल की बात कैसे करनी है, अस्पताल की बात कैसे करनी है, अस्पताल कैसे बनवाने हैं, रोजगार कैसे देने, महंगाई में कैसे लोगों की मदद की जाए, महंगाई के समय पे लोगों को कैसे राहत दी जाए, महंगाई कैसे कम की जाए। मोदी जी सोचते रहते हैं किसकी सरकार गिराई जाए, सीबीआई को किसके घर भेजूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे थोड़ी देश नंबर 1 बनेगा। देश को नंबर 1 बनाने वाले नेता की जरूरत है, देश को 24 घंटे सीबीआई 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 ईडी सीबीआई रटते रहने वाले नेता की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी ये सवाल होंगे कि बात हो रही है 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी की, कि उसमें कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ। तो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात हो रही है 2021-22 की पॉलिसी की, आप 2024 के चुनाव पे पहुंच रहे हैं, तो ये सब क्यों है? एक्चुअली ये साजिश इसलिए रची जा रही है, लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि नियत इनकी यही है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं 2024 के लिए, जिसको लोग ये पहले लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हु, आज लोग कह रहे हैं अब मोदी नहीं चाहिए, अब एक मौका केजरीवाल जी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने देख के देखा, पंजाब के लोगों ने देख के देखा, देखो कितने अच्छे काम हो रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखेंगे। And in the international news, a case has been filed against the former Pakistani Prime Minister Imran Khan on anti-terrorism charges. He has been accused of making provocative speeches and obstructing the judiciary from doing its job. And finally, the 40-story super tech twin towers in Noida is to be brought down by the end of the month, and over 7,000 people are likely to be affected. On the 28th of August, on the orders of the Supreme Court, these two 40-story high towers will be demolished by a controlled explosion. The explosives have been placed inside both these towers, distributed on each of the floors. More than 7,000 people living in two residential societies, Supertech Emerald and ATS Village, close to these two towers, are now living in fear. The Noida authority has prepared an evacuation plan for the safety of the people before the demolition. The Noida-Greater Noida Expressway will be completely closed on the 28th of August from 2:15 to 2:45 p.m. Society residents on either side of the Twin Towers will have to leave their homes from 7 a.m. to 4 p.m. There are 1,396 flats in the societies on either side of this tower. People will also have to remove their vehicles. An exclusion zone has been created around the Twin Towers, and fire brigades and ambulances will be kept in front. 40 pillars of the Emerald Quartz Society have been deemed as being not in a condition to withstand the blast. These pillars belong to the 3 towers where families are living right now. Based on the structural audit report, the repair work is now being carried out. Some pillars also have to be given structural support so that they don't fall at the time of the explosion. आजकल की टेक्नोलॉजी में हर आदमी जो है अभी क्लियर है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, और उस टेक्नोलॉजी से जो ये गिराया जा रहा है, जो एडिफिस है और उनके साथ में जो जेट साउथ अफ्रीका की जो कंपनी आई है, प्लस यूके से भी उन्होंने एक वो सर्वे कराया है, तो उन चीज़ों को देख करके अब वो भी कन्विंस हो रहे होंगे कि सेफ डिमोलिशन होगा। जो भी
अब और भगवान से प्रे करेंगे। ये उन्होंने 50 मीटर के रेडियस में बोला है कि क्रिटिकल जोन होगा, और उसका जो वाइब्रेशन का उन्होंने बताया है कि 22 मिलीमीटर पर सेकंड होगा, और जबकि हमारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड को वाइब्रेशन लेने के लिए तैयार हैं। These towers are being covered with a special type of cloth. This fabric is made of non-woven geotextile material and prevent dust. All residential towers nearby will be covered by the 26th of August. With Saurabh Shukla and Arvind Uttam, Ankita Mukherjee for NDTV.